Hey you guys, myself Rashid Jamnagni, and in this particular video I'm going to show you how to apply foundation on men's face. Please don't mind my these marks, these are not pimple marks, these are something else which I don't want to talk. So in this particular video I'm going to show you how to apply foundation on men's. Okay, applying foundation is a normal thing like put and apply, but on a men's it's different because we are not going to do that eye something, and other than that there are some point which you have to recall in your mind before using any of foundation. So first we will talk about foundation and then application and then how to apply. So let's begin. So first we will talk about foundation and its types. So there are generally three types of foundation: matte, which is for oily combination and normal skin. Second is dewy, which is for dry skin people generally, and third one is satin finish, which is not so dewy and which is not so matte. So that one I love. There are more types like demi matte that comes in the category of satin foundation. There are hydration that comes in a dewy foundation. They are like matte or skin like, they comes in the matte category. So which one you should pick? If you have very large pores, and you have very oily skin, so you should pick ideally matte or you for satin finish. If you have very dry skin and flaky skin, you should go for hydration or dewy foundations. And if your skin is combination or normal, you can go with any foundation which you want. So there are generally three coverage in foundation. First one is full coverage. So full coverage but एक mask like coverage देगी, like जिस color का you can't see your dark circles, you can't see your marks, you can't see anything underneath that foundation. That foundation will cover every single thing. Please don't mind my best. And second is medium coverage. Medium coverage is ideally that will be cover your face but not that cover. Okay, it will, you can your dark spots, your dark circles can peek out through that foundation. Third one is sheer is just to give you na even skin tone. उसमें से सब कुछ दिखेगा, dark circles and your dark spot. But if you have flawless skin, then it will give you just an even tone, nothing else, just a tint of it. So which one you should use? If you have hyperpigmentation or pimple marks and you have to hide them, go for high coverage, means full coverage. If you have normal skin like just like me halka full ka dark circles, not these are not marks. Okay, ये pimple patch है and they are DIY pimple patch, so उसकी वीडियो दूसरी है. So if you have skin like me, then you have to go for a medium, and आपकी मेरे से भी अच्छी skin like super flawless, then you have to go for a shade. तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जर्नली मेरे को जो देखा गया वो मीडियम से full coverage होते हैं. Sheer coverage are not that long lasting, so yeah, that's a drawback. So let's begin. For application, I have to suggest my top 3 foundations to you which I generally use. So if I need that proper matte coverage, so I go for this is the not, it's L'Oreal Paris Infallible Matte Coverage. It gives the full coverage, very long lasting, like no one's business. हल्का फुल्का ही ट्रांसफर होता है, not that transferable. And the most important thing, it doesn't enhance my texture, my pores, anything. And oxidize, little bit oxidation is there but not that much, and I'm using this from ages, and yeah, we will, there is so much. Second one is something from a luxury side, but I have used this every single day when I have to look like very natural but a slight bit of dewy. I don't have any dewy foundation because my skin is oily and I don't even like dewy foundation. So it is sorts of like dewy, matte or satin, हर तरह की दे देता है भैया. And it's also full coverage. It's by MAC. It's their studio fluid, and oh my god, it is slightly expensive, I'm saying that, but highly invest. Like I'm using, it's my second bottle, and I don't even earn, तो मैं इसके लिए पैसे बचाता हूँ. That much I love. And third one is the last. It's my like go to. I use this like सबसे frequently I use this, and I have the backup of this. Let me show you the backup of this. Like 1, 2, 3. This much I love this much. Okay, but why I use this doesn't oxidize a tad bit, non-transferable, full coverage, long lasting, gives you the perfect finish, like healthiest finish out of them is this. And it's the even close dupe of the MAC, so that's why I also use this. So these were my 3 recommendations. I have more, but these are my favorite. So let's begin with, you have to check some things like your skin should be well prepped, like clean,
moisturized and primed. Like primer is must, and after that you have to start with the application. I have done all these steps, so you now I can begin with the foundation. So which foundation will I use today? I will use my favorite L'Oreal Infallible Matte Cover Foundation. So how I will apply this, like tools, there are three tools generally: fingers, there sponge and brush. I generally prefer sponge and my fingers. I know it's unhygienic, but after washing your hands, there is no foundation, so it's hygienic according to me. So, but what's the difference? If you need the full coverage, fingers, then brush, and then sponge. Sponge gives you the most natural coverage after all these three, so you can go जैसा आपको चाहिए. But I'm not saying that brush will give you that fake finish. No, it's not that. But the most natural finish you will got from. So I have taken this much of foundation. This is very less. Like I don't apply too much. Just like I don't like. So how I will apply. जो आपकी अंडर आइज होती है ना, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग कंसीलर तो भी, और कंसीलर यूज़ करो तो भी, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेयर. लाइक वाई, जितना ज़्यादा आप अपना बेस के प्रोडक्ट्स लगाओगे उतनी आपकी आइज छोटी होती जाती हैं. लाइक इट जर्नली इज लाइक, एंड आई ऑलवेज अप्लाई दिस. आपको लगेगा मैं बहुत लाइट यूज़ करूँ, लाइट मतलब गोरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऑक्सीडाइज भी होता है जैसे मैंने बताया था, बट ज़्यादा नहीं होता. आप बोलोगे ज़्यादा तो नहीं होता, बट जितना होता है ना वो मेरे स्किन टोन से मैच कर देता है. एंड अभी मेरे समर शेड चल रहे हैं, सो दैट्स वाई ऑल्सो इट्स लुकिंग टू वाइट. और नेक पे कभी मत भूलना, बट नेक पे ये एरिया नहीं होता, नेक का ये एरिया भी होता है. एंड ईयर्स, यहाँ पे आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जस्ट यू नो एक जैसा लगने के लिए. स्पेशली जब आपका शेड ऐसा गलत हो जाए, लाइक इट्स नॉट गलत, इट्स माई परफेक्ट मैच. सो गलत किस वे में, क्योंकि अब ये मेरा समर शेड है, तो ये आपको लाइट लग रहा है, बट ये लाइट नहीं है. सो या, सो आई विल यूज़ दिस स्पंज बिकॉज इट्स दी मोर नेचुरल. सो मैं कैसे करूँगा, आइज से नहीं करेंगे पहले, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. आपको ड्रैग नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, आपको लेना है ऐसे ऐसे मारना ही, मान लो. एंड यू हैव टू जस्ट डू लाइक दिस, लाइक आई एम कमिंग क्लोजर टू यू एंड शो. आप यू हैव टू डू जस्ट लाइक दिस एंड लाइक लुक हाउ ईजिली इट इज़ ब्लेंडिंग. बट वन थिंग, इट्स ए मैट, तो आपको बहुत जल्दी होना पड़ेगा. आई नो अब मेरा कोई फ़ायदा नहीं है जल्दी होने का, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई डाउन हो चुका है, मैंने इतनी बात करी है, यू नो. सो या, अब मैं आइज़ के पास से कैसे करूँगा, लाइक जर्नली स्पंज ऑफ दीज काइंड ऑफ चौंच, एंड यू हैव टू पिंच इट. एंड नाउ जस्ट लाइक, आप जहाँ पे फाउंडेशन नहीं है ना वहाँ पे चौंच को प्लेस कॉर्नर ऑफ दैट, एंड यू हैव टू प्लेस. एंड आपको ऐसे जाना है, लाइक ऊपर से नीचे आना है. आई नो फाउंडेशन ऑलरेडी नीचे, बट यू हैव टू डू दिस वे. एंड तब आपको रियलाइज़ होगा. मैं इस साइड पे मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ देख के. जस्ट टैप उठाओ, टैप उठाओ, टैप उठाओ. कैसे करना है आपको, ऐसे रखना है, फिर उठाना है, फिर यहाँ पे रखना है, फिर उठाना है, और रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है. और इससे फिर आपको जल्दी जल्दी में करना है, जस्ट लाइक दिस. नाउ यू हैव टू टेक दिस कॉर्नर एंड डू लाइक दिस. लुक, ये मेरे से कितना मैच कर रहा है. लुक, इतना लाइक गोरा नहीं लग रहा है, एंड इट इज़ नॉट, इट्स माई शेड, बट अब आई एम लाइक टैन. एंड नोज पे आपको सेम वे में लगा है. नोज पे यू हैव टू माइंड थिंग, आपको नोज में उंगली देनी पड़ेगी. नो ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑलरेडी फाउंडेशन लग गया, तो मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहता. सो आई विल डू लाइक दिस एंड आई विल स्ट्रेच माई नोज एंड आई विल अप्लाई ऑन दिस साइड. यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है. लाइक कुछ लोग छोड़ देते हैं, वो बहुत छोड़ देते हैं, फिर वो बहुत वियर्ड लगता है, लाइक दिस. मैं यहाँ पे कभी नहीं लगाता, जस्ट बिकॉज ये नेचुरली डार्क होता है, और उस पर आप लगाओगे तो इट विल लुक फेक. फोरहेड पे आई यूज़ वेरी वेरी मिनिमल, लाइक आई डोंट यूज टू मच बिकॉज आई माई फोरहेड इज ऑलरेडी टैंड, लाइक नो वन. लाइक मैं कितना सनस्क्रीन लगा लूँ, दिस एरिया इज लाइक पिगमेंटेड, यू कैन से डार्क टू माई फेस. ओके, so I love that thing. I am not, oh sorry for that. So now for neck you have to do the same, okay, and yeah, just that, blend it. So as you can see I have like blended all well. like मैं आपको close में भी दिखा देता हूँ. You know my these things are picking, but ये मैंने बताया था DIY क्या था, DIY पिम्पल पैच है, तो ये ऐसे निकल आएगा. ठीक है, ये आपको लगाना भी नहीं है, मैंने तो लगा रखा है, आपको नहीं लगाना है. सो दिस इज, एंड आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखने लगाते हैं, एक आपकी ब्लेंडिंग. अगर जैसे मेरा मैट फाउंडेशन था तो आपको पार्ट्स में लगाना है, लाइक पहले यहाँ पे लगाओ, फिर ब्लेंड करो, फिर यहाँ पे आओ. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है.
And second most important thing, if your foundation is too oxidizing, one thing, keep them out and wait for few seconds. It will oxidize and then apply. तो आपको already एक अंदाजा होगा कि how will your foundation look after some period of time. Okay, you know it already oxidized, तो उसी कलर का हो जाएगा. Like after few minutes you are going to see that it is changed into my skin tone, and it generally happens with most of the foundation. Because what is an oxidization? Anything come in contact with air is called oxidization, and it will change its color. It's natural. So yeah, and second thing, do not apply too much foundation at once. Like that is the worst thing you can do, because foundation will look cakey after doing that. So you have to take very minimal and then you can build it up, because these days foundations and their formulas are built up. Sorry for that voice. And third thing, if your foundation is too much oxidizing, use any powder or light concealer to balance out that. So yeah, this is all for this video. I hope this video was helpful for you. If it is helpful, like my video is helpful, please make sure to like, and if you like me and my content, please do subscribe and comment down which section was more helpful for you. Till then, take care. Bye bye.